अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हम वतनों के साथ बातचीत कर सकें, और वो एक्सपर्ट्स या वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर कर सकें। इस शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया से जो लोग हमें ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन इस शो में हिस्सा बनाएंगे, और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो भी हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी यूट्यूब पर जाएं और लेट्स टॉक विद पाक हब को सर्च करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। जी नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं तो आप हमें अपने ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेजें। इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक किसी प्रोफेशनल फील्ड से है, आपका ताल्लुक किसी भी एक्सपर्टीज़ है आपके पास, या आपके पास कोई स्किल है, रिसर्च है, या कोई भी आपकी पॉजिटिव या मुफीद इन्फॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपका नॉलेज, आपकी रिसर्च, आपकी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाएँ। और ये शो भी हमारा पिछले शोज़ की तरह कोरोना वायरस की सिचुएशन के ऊपर ही होगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आज की डेट के मुताबिक, यानी कि 14 अप्रैल के मुताबिक, वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 18 लाख से ज़ायद जो हैं वो केसेस कंफर्म हो चुके हैं इस कोरोना वायरस के, और तकरीबन 1,17,000 से ज़ायद जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। और अच्छी ख़बर ये है कि तकरीबन 4,60,000 से, यानी कि 460,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त सेहत याब होकर अपने घरों में जा चुके हैं। नाज़रीन, आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर निगत आरिफ ने बुकिंगमशायर से, जो कि यहाँ पर एज अ जीपी काम कर रही हैं, एज अ डॉक्टर एनएचएस में काम कर रही हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो सेल्फ़ आइसोलेशन की सिचुएशन है, और जो हम सोशली हम दूसरे लोगों से कट ऑफ हो चुके हैं, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब यानी कि नफसियाती तौर पर लोगों के दिमाग में उनको क्या असर हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा जो ये जो कन्वर्सेशन है ये इंग्लिश में है, मगर हम अपने अगले किसी शो में इस तमाम कन्वर्सेशन को उर्दू में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने पेश करेंगे, ताकि उर्दू स्पीकिंग जो हमारे नाजरीन हैं वो इसको जो है वो समझ सकें। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर निगत, कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ विद दिस कोरोना वायरस सिचुएशन? As the coronavirus pandemic continues, millions of people across the world are coming to terms with being increasingly cut off from society through self-isolation and self-distancing. Beyond the inconvenience of working from home and not being able to go to bars, restaurants and cinemas, we know through research that social isolation can have a profound effect on people's physical as well as mental health. The thing is, we are living in uncertain times. Being in uncertain times can lead to stress. We as humans, we hate uncertainty. The uncertainty is infecting every single person at the moment, regardless of your age, class, race, gender, wealth, and status. I am seeing so many patients who are being really affected by the current pandemic. The problem is, uncertainty breeds anxiety. In this case, in the mix is a real risk to our mortality. Not knowing is an uncomfortable experience for us. As human beings, we are naturally curious. We seek to understand, predict, and control. It helps us to learn and it keeps us safe. Uncertainty can feel dangerous because we cannot predict with a complete confidence what will happen. As a result, both our hearts and minds may race. And when our mind is racing, we start to worry and we come up with increasingly different number of frightening possibilities. As humans, we learn to understand and handle uncertainty, and that's why we become resilient. However, in these bizarre, uncertain times, we are finding that uncertainty is happening to us on a huge chunks every day, and therefore it's affecting our mental well-being. We also know through research that when we're stressed, it can lead to high levels of inflammation around our body or raise our blood pressure. So for those with underlying health conditions, having high blood pressure, for example, can lead to further cardiovascular conditions such as stroke, heart disease, and renal failure. And how we can decrease this anxiety, this stress, and all this mental health issues in the current situation? So what's the most important thing that we can do to decrease anxiety and panic? It's now more than ever to reach out. That's the first thing we need to do. When we're becoming anxious and panicky, reach out to someone.
The problem is that we have a great way of connecting, but we like to connect through face-to-face, but we can't do that. So use the wealth of options that we have, such as texting, video calling, or even the phone can potentially help avert the sense of isolation and loneliness at the moment. Now, I know technology isn't the perfect substitution. We as humans, we're social animals. We love to have physical contact, being face to face with people. There's all sorts of subtle social cues that we pick up and that we rely on. It's ingrained in us through generations and millennia. But I do think that we need to start looking at digitally engaging with some people. So maybe rather than doing a phone call, you do a video call so you can see that person. Or rather than do a text message, do a phone call because you get a richer format of conversation. We need to be, again, really mindful of our older people who are at most risk of isolation at this time, and they might be less technologically savvy. So therefore, try and see if you can come up ways where you can be helpful for them. With my situation, we have an elderly neighbour, and actually we talk over the fence with them, and that's a way of connecting. It's really important at these times that we use innovative ways to look around us and we try and engage with the most vulnerable in society and stay bonded with them and connected. What are the most important things to do which can reduce the anxiety and this stress and this panic in this current situation? Actually, engage less with TV, watch less news, limit the amount of social media that you're having access to, eat healthily. If you are smoking, see if you can cut down or even stop smoking. And definitely, if you are drinking alcohol, then see if you can cut down the amount that you are, because it's easy to sit at home and drink or eat more than you should do. Okay, and how the physical activities, the indoor physical activities can affect this mental health situation? We know that when we exercise, we release chemicals like endorphins and serotonins, and these improve our mood. If you exercise regularly, it can decrease your symptoms of stress and mental health conditions like depression, anxiety. And also, we know through research, it helps people recover from their mental health issues. So it's really important to look at these. Okay, in this current situation, as we can't go outside, we can't go to meet our relatives and friends, so how we can manage our kids in this current situation? Now, when it comes to children, it all depends on the age of your child and how you tackle mental health in mental health issues, because your children are going to understand that the world around them has changed. I mean, for example, their routine is not how they used to be. Children will start to understand that things aren't how they used to be. For example, they will look at your behaviours and listen to your conversations from around the age of 4 or 5. So that's how, as young as your children will start picking up your cues. So fundamentally, what I say to parents is be honest with your child. Talk to them about the coronavirus at a level that they will understand. But it's really important to let them know that there are top scientists and world leaders who are working really hard to keep them safe. And it's really important that you are careful about not having conversations about your fears, particularly related to death or serious illness, if you're worried about friends or families in earshot of your children. Because children do pick up more than we realise, and they might misinterpret it, and therefore that will lead to their anxiety. And this is a really good opportunity to start teaching your children about growing into responsible citizens, abiding by the measures set out by the government, letting them know what social distancing means, and also reminding them that we all have to do our part to spread kindness and support each other. Okay, in this current situation, our kids, they are having online classes and they are playing most of the times games on their PlayStations, Xbox. So how this gaming it's affecting their mental health situation? So a lot of parents ask me is if their child is doing online study and games, will they affect their child's mental health? Now, we know that online studying, gaming, watching TV and some films can be a really good distraction from being at home all the time, which again, as I said before, is highly unusual for your child. So it's important that you form a balance within screen time and how much activities that they're doing around the house. So usually what I would say is try and form a daily routine where they're allowed to play games and online study, and then mix it up so they're away from their screens in order to get a balance.
My last question is about the religion, that how religion is playing its role in this current situation. Well, at times of unusually high uncertainty situations, faith, religion can be really important for millions of peoples across the world. People of all faith might use this time to reflect, study, and have a spiritual connection that allows them to cope with the pandemic. There are charities throughout many mosques, temples, churches, synagogues that will support local communities. The most important thing is to have hope, regardless of those with faith or no faith. Hold on to that hope. Whatever you believe, we will get through the current pandemic together. Okay, thank you very much, Dr. Nigat. जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही डॉक्टर निगत आरिफ जो कि बुकिंघम शहर में एज ए जीपी के तौर पे काम कर रही हैं, और वो हमें बता रही थी कि इस वक्त मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो नफसियाती तौर पर जो मुश्किलात हैं या मसाइल आ रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बच्चों पे क्या असर हो रहा है, बड़ों पे क्या असर हो रहा है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और जो इस वक्त एक पैनिक है उसको कम कैसे किया जा सकता है, तो इस सिलसिले में वो बात कर रही थी। तो हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में इस पूरी कन्वर्सेशन को, इस पूरी जो हमारी जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, इसको हम उर्दू ज़ुबान में भी वो ट्रांसलेट करेंगे ताकि उर्दू स्पीकिंग जो हमारे नाजरीन हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, पिछले शोज़ की तरह एक बार फिर हम आपको बताते चलें, ये हम बात पिछले शोज़ में बार बार आपके साथ पिछले शोज़ की तरह रिपीट कर रहे हैं कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है, मिल रही है मुख्तलिफ मीडियम से, उसको आप पहले वेरीफाई कर लें। बेहतर यही होगा कि आप उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें जो आपके गवर्नमेंट के इदारों से या हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं हेल्थ के इदारों से जो आपको आ रही है उसको फॉलो करें, और या फिर WHO की जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। उनकी एडवाइस यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़ोर दें, आप दूसरे लोगों से दूर रहें, घर से बाहर ना निकलें, अशद मजबूरी की हो तो उसी वक्त ही आप घर से बाहर निकलें, हाथ को बार बार धोएं और बाहर निकलते हुए अपने हाथों को अपने जो फेस के साथ टच ना करें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपके पास कोई नॉलेज है, एक्सपर्ट ओपिनियन है या कोई भी रिसर्च है जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमें भेजें। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो है शेयर करें लोगों के साथ साथ। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने एक अपनी वेबसाइट पे एक नया पोर्टल लॉन्च किया है कि अगर आपका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशन से है तो आप हमें उस पोर्टल के ज़रिए आप रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद हम आपसे रब्ता करेंगे और आपसे जो एक्सपर्ट ओपिनियन है या आपकी जो भी एक्सपर्ट राय है, आपकी इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। हमारी इस वक्त वेबसाइट की जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी गूगल पर जाएँ या यूट्यूब पर जाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इस शो का जो मकसद है वो यही है कि पूरी दुनिया में जो पैनिक की सिचुएशन चल रही है इस कोरोना वायरस की वजह से, मायूसी, पैनिक और खौफ व हिरास है, हम ये चाह रहे हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लोगों तक मुस्बत इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और उनको जो हमारे प्रोफेशनल जो हैं उनकी एडवाइस पहुँचाएँ ताकि वो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकें। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले शो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेट्स टॉक विद पाक हब को देखते रहिए, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग लेट्स टॉक विद पाक हब। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।